Hey, hi guys, welcome back to my channel. In today's video, this is the second part of the my first video where I gives you the tip to develop free speaking at home. How can you develop the free speaking at home if you have no environment at home for the English speaking? So अगर आपके घर में इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है तो उस इन्वायरमेंट में रह के आपने फ्री इंग्लिश कैसे बोलनी सीखनी है, तो इस वीडियो के अंदर ये वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है. आप एक बार गो बैक टू दैट वीडियो जहाँ पे आपको थोड़ा टिप मिलेगा इसके लिए कि किस तरह से आपने फ्री स्पीकिंग करनी है, फ्री स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है अगर आपके घर में फ्री स्पीकिंग वाला इन्वायरमेंट, आपके घर में इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है. सो फर्स्ट let's start with this video. As many in my previous video, as I mentioned that I gave you the four modules, right? That first module was the fluency, second is vocabulary, third is grammar, and fourth is pronunciation. Now in today's video we will start working on that, how all these four modules will help you out for your for your free English speaking. So to learn, it will help you to learn free English speaking at home without anybody's help. So what you need to check in fluency. Before starting this discussion, if you are new on this channel, please do subscribe this channel, and also if you like to do free English speaking classes set up with me, then what you need to do, you need to like and share and subscribe my IELTS Wisdom channel. If you will like this channel and if you will subscribe my channel, then it will gives you an opportunity to subscribe to learn free speaking with me. Okay, so now let's get started. सो फ्लुएंसी के अंदर आपने क्या करना है, सो चेक लेंथ ऑफ योर आंसर. सो जो एग्जामिनर आपका चेक करता है, आपकी लेंथ को चेक करता है. सो अगर आप उसको एक ही वर्ड में बता दोगे अपने होम टाउन के बारे में कि वेयर इज़ योर होम टाउन, सो आप बता दोगे जी हाँ, माई होम टाउन इज़ इन चंडीगढ़, माई होम टाउन इज़ ऊना, माई होम टाउन इज़ इन लाइक हिमाचल. सो ये आपको देगा बहुत ही कम मार्क्स. तो आपने क्या करना है, उसको डेवलप करना है, उसको बताना है कि आई बिलोंग्स टू विच एरिया एंड वेयर इज इट इज़ एंड हाउ कैन वी गो ओवर देयर. सो दे तीन से आपका थोड़ा आंसर जो है वो बड़ा होगा और आपका जो आंसर्स जो है उसके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट आएगी. सो डेवलप योर आंसर मोर फॉर हायर स्कोर बैलेंस. अगर आपने हाई बैलेंस स्कोर लेना है तो आपको आंसर को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा. Another thing you can check in your answers in pauses, like how many times you use pauses. Means the hesitation, कितनी बार आपने वो यूज़ किया है. आ सो ये जो आप आस एंड अम्स यूज़ करते हैं, अवॉइड टू यूज़ दीज इन योर स्पीकिंग. जब आप रिकॉर्ड करोगे उसको बाद में सुनोगे, देन यू कैन फाइंड ऑल दीज hesitations and pauses in your video. सो इन योर स्पीकिंग रिकॉर्डिंग. सो रिकॉर्डिंग के अंदर अगर आपको ये सब कुछ सुनने में मिल रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी है अपने स्पीकिंग के अंदर और ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड, इट विल गिव्स यू लेस स्कोर. एंड अगर नेक्स्ट जो है वो अपने, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ दैट प्रॉब्लम, आई एम अफ्रेड यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे टू प्रैक्टिस मोर and that you can get rid of your pauses. So another thing you need to check, how much time you are silent. ओके, सो समटाइम्स लाइक आपने वीडियो जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसके अंदर आपने डेवलप कर लिया अपना आइडिया और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, लेकिन काम करते करते, जैसे आप रिकॉर्डिंग करते करते आप अपना लॉस कर दे, अपना जो थिंकिंग ट्रैक जो है लूज़ कर देते हो. लाइक आपको समझ में नहीं आता कि ओ अभी इसके अंदर मैं और क्या लिखूँ, आप 1-2 मिनट के लिए पॉज या साइलेंस ले लेते हो, तो दैट इज़ नॉट गुड. सो आप ये भी चेक करें हाउ मैनी टाइम्स यू वर साइलेंट इन योर रिकॉर्डिंग. सो अगर 2, 4, 6 मैक्सिमम टाइम है तो दैट इज़ अगेन नॉट गुड, इट विल गिव्स यू अ लेस स्कोर. सो एंड जो आपको काम क्या करना है इसके लिए, प्रैक्टिस मोर करनी है, रीडिंग मोर करनी है, टॉपिक को लेके, अपने होम टाउन को लेके. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वोकैबुलरी. सो वोकैबुलरी में आपने क्या क्या खुद का चेक करना है, रेंज, पैराफ्रेजिंग एंड मिस्टेक्स. सो रेंज के अंदर आपको, जैसे कि होम टाउन की हम बात करते हैं तो होम टाउन में आपको सबसे पहले उसकी रेंज ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट अपने सामने रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, बिफोर स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट. तो आपने सबसे पहले उसके स्पीकिंग के जो टॉपिक्स हैं, उसकी वोकैबुलरी है, उसके ऊपर वर्क करना है. और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी हो सकती है आपने उसके ऊपर वोकैबुलरी वर्ड्स के ऊपर आपने लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स अपने सामने रखने. अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट योर स्पीकिंग. एंड सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, यू नीड टू शो द रेंज ऑफ योर वोकैबुलरी वर्ड्स, पैराफ्रेज. ओके,
जिसको हम पैराफ्रेजिंग्स बोलते हैं, 4 डिफरेंट वर्ड्स विद इन द सेम मीनिंग। तो जो भी आपका सेम मीनिंग का एक ही वर्ड है, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है, तो उसके साथ आपने उसको लिखना है। ओके, सो उसके साथ जब आप एलाबोरेट करोगे अपने स्पीकिंग के अंदर उस टॉपिक को, तो आपने वो एक वर्ड ना यूज़ करके ओवर एंड ओवर आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ एलाबोरेट करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो हाउ यू कैन improve, and you, if you can use, if you are using the paraphrases more in your speaking, you can looking the bounce score 7 or bounce score 8. So this is how you can get your height. And the third thing you need to check on grammar is what? Grammar, check your mistakes again. कैसे आपने ग्रामर के अंदर मिस्टेक करनी है, मिस्टेक्स को चेक करना है कि आप अपनी ग्रामर के जब आप स्पीकिंग करो तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तो बात नहीं कर रहे हो. सो यू नीड टू चेक योर नाउन्स, वर्ब्स, ग्रामर्स करेक्टली and tenses. You are not simple using the simple present tense. You can also talk in the simple present tense and also include that the past, simple past in there, past tense in there. Like I was my present, like hometown is in this city, but previously I was staying in that city, in that hometown or that place. Okay, so this is how you can give them the answer for present and past. So this is how you just let them know that you know about the tenses and you know how to use it in a present with the past. Okay, so second है आपका sentence structure. Sentence structure के अंदर आपने क्या करना है, how complex sentence structure it is. So you can use the phrase, paragraphs, start using the linkers. Like linkers क्या है? So when you start and connect the connectors जिसे आप बोलते हो, उसको यूज़ करके हर बार आपने सिर्फ एंड अगर यूज़ किया है, डोंट यूज़ एंड ओवर एंड ओवर, यूज़ समथिंग एल्स. एग्जाम्पल है जैसे, तो डोंट यूज़ एवरी टाइम एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल, सेकेंड टाइम इंस्टेंस, अनदर हैपनिंग. सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं. सो मिस्टेक, अगेन चेक योर मिस्टेक्स इन ग्रामर, कि कितनी बार आपने मिस्टेक्स की है ग्रामर के अंदर. एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको चेक करनी है, वो आपको चेक करना है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपने उसको कैसे चेक करना है कि आप check your pronunciation with individual sound, like school, sh, sh, ch, sh. So इस तरह की साउंड जो आपकी रहती है वो आपने चेक करना है कि आप ठीक से बोल रहे हैं. अगर वो गलत होगी तो भी it will gives you a less score and probability is very less. So you need to check your sounds, what you are speaking and how they looks like. And बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू प्रोनाउंसिंग एनी वर्ड्स, you can have to go to the online dictionary. You can type your word over there and there is a small speaker button is there. You can click on that and they will gives you the right answer and right pronunciation of the particular word which you are looking for. So इस तरह से आपने करना क्या है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है. डिक्शनरीज के अंदर जाए, डायरेक्टरीज के अंदर जाए, ऑनलाइन उसके ऊपर वर्ड को लिखिए और छोटा सा जब वहाँ पे एक स्पीकर का साइन होता है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड है, वो प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड की आपको मिल जाएगी. तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो एनोटेशंस क्या रहती हैं, डोंट स्पीक फ्लैट, right? Annotations, you need to use the pauses. Like pauses is not mean like no. This is the pauses like expressions. You always gives your expression in Hindi और पंजाबी. आप जैसे आप अपने expressions देते हो, हाँ सच्ची, like oh really, how do you know that? आप कहते ना तनु क्यों पता है, how do you know that, like that. You need to give your expressions. Okay, जो भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, जो भी स्पीकिंग कर रहे हैं, उसको आप एक फ्लैट पेस के अंदर मत लेके जाएं. यूज़ एनोटेशंस, यूज़ योर एक्सप्रेशंस, यूज़ योर फेशियल एंड योर वॉइस एक्सप्रेशंस. ओके, सो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स जो हैं, आपके ग्रेड जो हैं, आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा. एंड प्रैक्टिस, last thing is practice and record again. Do it and record again until unless you will get the less pauses and less and then you have get the high score. If you are less pauses, good fluency, good vocabulary, good grammar range in there and good pronunciation, definitely you will get the good score. And this is all I have it in this video. If you need more ideas like that, please
follow my channel and also share this video with your friends, subscribe this channel, and also please let me know if you need any other help. Thank you very much for watching this video, and also we will see you in the next video where I'll give you the vocabulary word range on the topic today we will discuss here in hometown. So ऐसे ही मैं आपके different topics के लिए topics के vocabulary words every week down upload करती हूँ. Please go over that and try to make the sentences on that by using that vocabulary word. So it will give you an help in the exam to get more used to it, to use that words in your final speaking exam. Thank you very much for watching this video. Best of luck for your exam. And if you need any free speaking class, then you need to subscribe this channel and let me know about your all information. Thank you very much for watching this video.